Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic plaint, which has been provided under Order 7 of a CPC. Students, while dealing with this particular topic, that is plaint, why we need to understand it in a better way, for the reason that plaint is considered to be a document by the presentation of which the suit is instituted. It is a statement of claim. It is a statement which is made by the plaintiff before the court. It is an application which is made before the court of law about a legal wrong which is caused to the plaintiff by the defendant. It contains the entire narration of the civil wrong which is caused to the plaintiff on which the assistance of the court is sought. It is therefore to be called as a pleading of the plaint. While dealing with this definition of the term plaint, we came to know that the plaint is a presentation which initiates the suit before the court. It is also a statement of the claim. It is always to be made before the court, and it must state the legal wrong which is caused to the plaintiff, and also that the plaintiff needs an assistance of the court, and therefore it is to be filed before the competent court. Now, plaint must be presented in the court having a jurisdiction to entertain and try the subject matter of the suit. When we say that the plaint must be presented in the court having a jurisdiction to entertain, it means that whenever we are filing a plaint, it must be filed before the competent court. Now, when we talk about the competency of the court, it means that the court must be competent relating to the territorial jurisdiction, the subject matter of the suit, the power of the court, the authority of the court to entertain that particular matter. Now, if we take into consideration the various parts of the plaint, then in that case, we'll come to know that it contains 5 parts. Firstly, the heading. Next is the cause title. The third one is the body of the plaint. Fourth one is the prayer clause. And next is the signature and the verification. Now, let us understand one by one what is covered under the heading. Heading contains the name of the court in which the suit is brought. That is to say, for example, we could see whenever a plaint is filed, always the plaint starts with before the court of Civil Judge Junior Division, Nagpur, or else. Next is there is a registration number of the suit with a year. Here, the regular civil suit number 320 of 2020. Year 2020 is a year, and the 320 is a regular civil suit number. Heading contains the name of the court before which the plaint is filed. Next is the cause title. Cause title contains the description of the litigating parties. There must be at least a contesting party in a suit, plaintiff and defendant. These contesting party must be described in description. That is to say, it should contain the description of the parties. The description of the parties inclusive of the name of the parties, age of the parties, occupation of the parties, and complete postal addresses of the plaintiff and the defendant. Next is the body of the plaint. Now, what does the body of plaint contains? It contains the entire grievance of the plaintiff and his claim. It commences with the caption indicating the reason of the plaint and or the law under which it is filed. For example, the suit for recovery of money or the application for grant of compensation of rupees 8 lakh. So this is nothing but a what? It is a body of the plaint which start with this particular subject matter of the suit. Now next is the prayer clause. The prayer clause is given after the entire narration of the story of the plaintiff. It concludes the plaint. What does the prayer clause do? It concludes the plaint. It contains the relief which is claimed by the plaintiff. It commences with the opening sentence. It is therefore prayed that this honorable court may be pleased to grant so and so relief to the plaintiff. So the prayer clause contains all the relief which the plaintiff is asking for. A part of these basically relief, there is always one prayer which the plaintiff always asks to the court is any other relief which the court deems fit. Suppose if
there is any other relief which is left by the plaintiff or which the plaintiff is not actually known about that particular, not knew about that particular relief, then in that case the court may give that particular relief to this particular plaintiff. So it is prayer clause contains the prayer which are asked by the plaintiff, and in the last line which says that whatever the relief which the court deems fit, the court may grant to the plaintiff. Next is, it is the signature and verification. Student, this is the last point which speaks about the signature and verification of the plaint. This is the last body part of that particular plaint. At the end of the plaint, there is a signature of the plaintiff and his counsel. Thumb mark can also be used as a valid signature in case the plaintiff is illiterate. If a party is unable to sign due to absence or any other good cause, अगर पार्टी जो है वो अनेबल है साइन करने के लिए ड्यू टू, क्योंकि वो एब्सेंट है या फिर किसी भी अदर रीजन की वजह से, his pleading may be signed by any person duly authorized by him. तो उसकी जो प्लीडिंग है, जिस भी पर्सन को वो अथॉरिटी देगा, उस पर्सन के द्वारा वो प्लीडिंग जो है वो साइन की जा सकती है. इन केस ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स, अगर मान लीजिए बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं जिन्होंने मिलकर प्लेंट फाइल किया है, द प्लेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द प्लेंटिफ. द प्लेस एंड द डेट ऑफ फाइलिंग बिफोर द कोर्ट मस्ट ऑल्सो बी मेंशन्ड. आपने प्लेस और कौन सी डेट को बेसिकली प्लेंट फाइल कर रहे हैं ये भी प्लेंट पे मेंशन करना चाहिए. If we take into consideration the contents of plaint, then in that case order 7 rule 128 provides for the contents of the plaint. Now what are the contents of plaint? Firstly, there has to be a name of the court in which suit is brought. There has to be name, description and the place of residence of plaintiff as well as the defendant. Next, it is the representative character. Suppose if there are n number of parties who are the, or we may say there are the joinder of plaintiffs and the joinder of defendants, or if any of the person is representing the other plaintiffs, then in that case such kind of a suit would be termed to be a representative character suit. And next is the minor or a person of the unsound mind is a party to the suit, then in that case the statement to that effect must be written down under the plaint. Next is the cause of action, whatever the basically rights which got violated of the plaintiff and which has given a right to the plaintiff to have a file, to have a suit filed against the defendant before the court would constitute a cause of action, and hence the cause of action should always be there in the plaint. Next is the exemption from the limitation. If suppose the plaintiff has not filed the plaint within the time limitation which has been provided under the Law of Limitation Act 1963, and if suppose an exemption is granted to him, or if he is desiring to get an exemption, then in that case on what ground he believed to be exempted has to be stated by the plaintiff in the plaint. Next is the jurisdiction of the court, that the court is having a competent jurisdiction. The territorial, the pecuniary jurisdiction and the jurisdiction over the subject matter need to be mentioned before the court in the plaint itself. आपने देखा होगा एक आखिरी के पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है कि कोर्ट जो है वो उसको कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर को एंटरटेन करने के लिए. नेक्स्ट इज द रिलीफ सॉट, दिस इज व्हाट अ प्रेयर क्लॉज. नेक्स्ट इज सेट ऑफ और अ रिलिंक्विशमेंट. अगर मान लीजिए सेट ऑफ या रिलिंक्विशमेंट आप अगर क्लेम करना चाहते हैं, देन इन दैट केस वो भी आपके प्लेंट में मेंशन होना चाहिए. नाउ सेट ऑफ मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने प्लेंट आपके अगेंस्ट में फाइल किया है और उसमें कहा है कि आपसे 5,000 रुपए लेना उसको बनता है, यानी कि दूसरे पर्सन यानी आप जो हैं आपके ऊपर 5,000 रुपए उधार है और वो आप रिकवरी के लिए आपने प्लेंट डाला है. डिफेंडेंट बोलता है कि यस माय लॉर्ड, मैं एडमिट करता हूं कि मुझे 5,000 रुपए प्लेंटिफ को देना है, बट व्हाट अबाउट जो मैंने उसको पिछले महीने 2,000 रुपए दिए थे, एटलीस्ट वो 2,000 रुपए तो इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि आई हैव आउट ऑफ दैट 5,000 आई हैव ऑलरेडी पेड 2,000 रुपीज. देन इन दैट केस ये जो 2,000 रुपीज है वो सेट ऑफ कर दिए जाएंगे उसमें से. या तो फिर अगर मान लीजिए प्लेंटिफ खुद 5,000 रुपए में से बोलता है कि सिर्फ मुझे 4,000 रुपए मिल गए तो भी चलेगा, 1,000 रुपए नहीं भी मिला तो भी चलता है, तो अगर वो ऐसा रिलिंक्विश करना चाहता है अपना कोई क्लेम तो भी उसने प्लेंट में मेंशन करना चाहिए. नेक्स्ट इज वैल्यूएशन, यानी कि वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट को पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आ रहा है या नहीं, कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वहां पे वैल्यूएशन लिखें कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो कोर्ट के पिक्यूनरी
पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज अमाउंट क्लेम्ड। अगर मान लीजिए आप सूट फाइल कर रहे हैं फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट, देन इन दैट केस आप जो है वो अमाउंट कितना क्लेम कर रहे हैं उसे मेंशन करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट यदि कोई क्लेम कर रहे हैं तो वो मेंशन करना है, कब से कब तक का इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं वो मेंशन करना है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं जिस तारीख को सामने वाले ने मना किया था आपको पैसे रिटर्न करने के लिए, तब से लेके टिल द रियलाइजेशन, तो यहाँ पे आपने देखा जाए तो सूट भी कुछ समय के बाद में फाइल किया और सूट आपने फिर पूरा लड़ा और उसके बाद में आखिरी में जब आपके फेवर में डिग्री आ गई फिर भी वो पैसा रिकवर करने के लिए आपने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल की और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल होने के बाद में लास्ट में वो पैसा आपके पास में वापस आया। तो इस तरीके से जो भी अमाउंट आप क्लेम करना चाह रहे हैं, अप्रोक्सीमेट या फिर फिक्स्ड, अगर मान लीजिए 50,000 रुपए ऐसा फिक्स है कि भाई मैंने इनको दिया था, इनसे मुझे लेना है, ये अमाउंट फिक्स हो गया और इसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात आपके और मेरे बीच में सपोज कभी तय नहीं हुई थी, लेकिन यदि मान लीजिए इंटरेस्ट वाली बात तय हुई थी तो टिल द रियलाइजेशन ऑफ दैट पूरा प्रिंसिपल अमाउंट हम उसके ऊपर इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। तो इस तरीके से हम अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे, कितना अमाउंट हम प्लेट में क्लेम करना चाहते हैं वो हमको वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सपोज मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके रिलेटेड सूट फाइल करना चाहती हूँ, देन इन दैट केस मुझे पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में डिस्क्रिप्शन देना होगा। जैसे प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, कितने बाय कितने की है, एडमिजरिंग क्या है, खसरा नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, एरिया नंबर क्या है, एनए है नहीं है, लैंड है, कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर नहीं है, कितना है, कंस्ट्रक्शन है तो फिर कितना है, ये सारी चीजें जो है मुझे वहां पे मेंशन करनी होगी। नॉर्थ में क्या, साउथ में क्या, ईस्ट में क्या, वेस्ट में क्या है बेसिकली उस प्रॉपर्टी के, वो भी सारा चीज मुझे डिटेल में मेंशन करना होगा मेरे प्लेंट में। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट। नाउ इंटरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट का मतलब ये होता है कि डिफेंडेंट जो है उसको क्या इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर सूट में एंड हाउ ही इज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, दैट इज व्हाट आल्सो हैज टू बी मेंशन्ड इन द प्लेंट। नेक्स्ट इज अगर मान लीजिए मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड किया है मेरे साथ, देन इन दैट केस मुझे वो भी एज अ प्लेंटिफ मेरे प्लेंट में लिखना चाहिए, क्योंकि इस मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को ही मैं कोर्ट के सामने लाके व्हाट आई एम आस्किंग फॉर द कॉम्पनसेशन, अगर मैं सूट फॉर कॉम्पनसेशन फाइल कर रही हूँ तो, या फिर सूट फॉर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर डालना चाह रही हूँ और उसमें अगर डिपेंडेंट ने मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया है तो मुझे वो भी स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करना चाहिए। देन अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो मुझे इलीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये चीज भी मुझे मेरे प्लेंट में मेंशन करनी चाहिए। देन इफेक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इफेक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स विच आई एम हैविंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट माई क्लेम as a plaintiff, whatever the document which I am having as a document which are going to support me in my claim, then in that case what would be the effect of this particular document, that is to be also mentioned without setting out the format of the document। हमने document का format क्या है ये बताने की बजाय document मेरे पास कौन से हैं और उनका क्या effect है ये चीज मुझे plaint में बताना चाहिए। नेक्स्ट इज नाउ अब मेरा प्लेंट जो है वो कोर्ट के सामने एडमिट हो गया है। अब रूल 9 जो है वो ये बता रहा है कि जब कोर्ट के सामने हमारा प्लेंट एडमिट हो जाता है तो व्हाट वुड बी दी प्रोसीजर। द प्लेंटिफ जो है सबसे पहले तो उसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अनेक्स करना है जब वो प्लेंट फाइल कर रहा है। इसके बाद में प्लेंट हमारा एडमिट हो गया और प्लेंटिफ जो है उसको प्लेंट की कॉपी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट की कॉपी डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स व्हाटसोएवर में भी उनको हमको सप्लाई करना है। फिर उसके बाद में आता है जो भी हम कॉपी सप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट की या प्लेंट की वो हमको प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर ही प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज प्लेंटिफ टू पे रिक्विजिट फीस फॉर द सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिपेंडेंट विद इन दी 7 days। अब जो मैंने प्लेंट फाइल किया है, मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया है, डिपेंडेंट के लिए कॉपी सप्लाई कर दी है कोर्ट में, तो मुझे अब ये कॉपी जो है डिपेंडेंट को भेजी जाए, इसके लिए कोर्ट में सर्विस ऑफ समन्स कराना है और सर्विस ऑफ समन्स जो है मुझे उसके लिए क्या करना है, रिक्विजिट फीस पे करनी है। कितने दिन के अंदर? विद इन दी 7 days मुझे क्या करना पड़ेगा, समन्स इशू करवा लेना पड़ेगा और उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी। नाउ रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। रूल 10 जो है वो ये बोलता है कि सपोज इट कोर्ट while going through my plaint found that this particular plaint need to be returned for the reason that it does not have a it is having a lack of jurisdiction on the ground of lack of jurisdiction।
Then in that case, the court on the ground of having lack of jurisdiction can return the plaint at any stage of the suit. किसी भी स्टेज में उसको क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है. While returning the suit, पर जब भी कोर्ट इसको रिटर्न करता है तो कोर्ट उसमें क्या करेगा, रीजंस एंडोर्स करेगा, डेट एंडोर्स करेगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि देयर वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और मैं इस तारीख को इसको रिटर्न कर रहा हूँ, द डेट टू रिटर्न ऑफ द प्लेंट, फिर कौन सी पार्टी ने प्लेंट प्रेजेंट किया था, द नेम ऑफ द पार्टीज व्हिच प्रेजेंटेड द प्लेंट एंड रीजन फॉर रिटर्निंग द प्लेंट, और क्या क्या रीजन की वजह से मैं प्लेंट रिटर्न कर रहा हूँ. So this is what is to be need to be mentioned by the court if suppose the court is returning the plaint. Now rule 11 to 13 deals with the rejection of the plaint. Now what are basically the grounds for rejection of the plaint? There are few grounds over which the court may reject the plaint. सबसे पहले फर्स्ट ग्राउंड है इफ डज नॉट ब्रिंग्स आउट एनी कॉज ऑफ एक्शन. अगर हमारा प्लेंट जो है वो कोई कॉज ऑफ एक्शन ही ब्रिंग आउट नहीं करता, then in that case the plaint would be rejected. Second is अगर plaintiff जो है उसने जो भी claim basically claim किया है plaint के अंतर्गत वो under value है, यानी कि कोर्ट के pecuniary jurisdiction के अंतर्गत नहीं आता, then in that case कोर्ट जो है वो उसको क्या कर देगा, reject कर देगा. Next, if the plaint is written on a paper insufficiently stamped, अगर insufficient stamped है लगा हुआ पेपर्स पे तो भी कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देगा. नेक्स्ट इज इफ द सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, अगर सूट जो है वो बार्ड है लॉ के द्वारा, देन इन दैट केस कोर्ट जो है उस मैटर को रिजेक्ट कर सकता है. इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जब भी कभी हम प्लेंट फाइल करते हैं तो हमको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ता है. स्टैट्यूटरी प्रोविजन में डिफर फ्रॉम वन स्टैट्यूट टू द अनदर स्टैट्यूट, बट यदि हम ये इसका कंप्लायंस नहीं करते हैं देन इन दैट केस our plaint would be rejected. If the plaint is not filed in duplicate, because we need to file a copy for defendant also, जितने डिपेंडेंट रहेंगे उन सबके लिए कॉपी देनी पड़ेगी, कोर्ट की कॉपीज देनी पड़ेगी. अगर हमने वो नहीं दिया देन इन दैट केस आल्सो आवर प्लेंट वुड बी रिजेक्टेड. इफ देयर इज नो नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो हमारा मैटर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है. बट आई मस्ट टेल यू इतना इमीडिएट इंस्टेंट इसमें कोर्ट रिजेक्ट नहीं करता है. दे गिव अस दी अपॉर्चुनिटी. जैसे सपोज अगर अंडर वैल्यू है तो बोलता है सफिशिएंट कोर्ट फी भरो. इसके अलावा अगर सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कॉपीज नहीं दी है डिपेंडेंट को तो हमको कहता है कॉपी सप्लाई करो, तो एकदम वेरी इंस्टेंट में रिजेक्ट नहीं करता है. बट दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, अगर बार बार बताने के बाद में भी इफ वी आर नॉट कंप्लाइंग विद दैट स्टैट्यूटरी नॉर्म्स then in that case our plaint could be rejected. Now let us see the other grounds for rejection of the plaint. The plaint is signed by an unauthorized person is a sufficient ground for rejecting it. यानी जो पर्सन बेसिकली अनऑथोराइज है ऐसे पर्सन के द्वारा यदि प्लेंट साइंड है देन इन दैट केस हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है. सेकंड इज इफ डज नॉट डिस्क्लोज एनी राइट वेस्टिंग इन द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ को कोई राइट ही नहीं है कोर्ट में आने का, जिस बात को लेके वो कोर्ट में आया है वो बात को लेके कोर्ट में आने का प्लेंटिफ को कोई राइट ही नहीं है, ऐसा अगर दिखाई देता है तो भी कोर्ट जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा. अगर सूट जो है वो प्री मेच्योर है, यानी अभी तक जो है बेसिकली प्लेंटिफ को राइट मिला ही नहीं है बट पहले ही उसने सूट डाल दिया है, देन इन दैट केस इस तरीके का सूट भी हम रिजेक्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट इज द प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट अ बिलेटेड स्टेट. नॉर्मली तो प्लेंट हमने इसके पहले वाले इसमें पढ़ा कि किसी भी स्टेज में रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब बहुत लेट स्टेज तक पहुंच जाती है, जैसे आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज या फिर अभी डिक्री पास करने की स्टेज आ गई है, एविडेंसेस हो गए पर अभी तक कोर्ट को किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है कि द कोर्ट डू नॉट हैव अ ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द सेम, देन इन दैट केस ऐसी सूरत में ऐसी सिचुएशन आती है कि लेटर स्टेज में कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है. बट नॉर्मली बाय वर्च्यू ऑफ द रूल्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड द प्लेंट कुड बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज. Next is suppose if the plaint is rejected, what is the effect? Then in that case जो भी ऑर्डर होता है जिसमें कि जिसके तहत हमने प्लेंट रिजेक्ट किया है वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो डिक्री कंसिडर किया जाएगा और उसके अगेंस्ट में अपील भी की जा सकेगी. सो ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट shall be deemed to be a decree and hence it is appealable one. So students, thanks for attending this session today.